First word is distinguish. Distinguish, it is a verb, and let us see its meaning. To notice or understand the difference between two things, or to make one person or thing seem different from another. So distinguish, it is very much similar to the word difference, and let us read an example. Here is a color blind. He is a color blind and can't distinguish, can't differentiate red or green easily, or can't distinguish the difference between red and green easily. I sometimes have difficulty distinguishing Spanish from Portuguese. So this is the word distinguish, and it has one another meaning, that is distinguish yourself, to do something so well that you are admired and praised for it. इफ आप इतना कोई चीज़ इतने अच्छे से करते हो कि सभी से आप बेटर कर रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड. ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ राइटर एट अ वेरी अर्ली एज. सो इस तरह से भी इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है. Well, the first word is vulnerable. Vulnerable. Vulnerable, and it is an adjective. Its meaning is able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced, or attacked. So, कोई चीज़ है जो जिसको easily hurt किया जा सकता है, उस चीज़ को हम define कर सकते हैं as a vulnerable. And let us see an example. I felt very vulnerable standing there without any clothes on. And the next example is, it is on economic policy that the government is most vulnerable. And another example, it is easy one. Tourists are more vulnerable to attack because they do not know which areas of the city to avoid. And so this is word vulnerable. Its opposite word is invulnerable. Invulnerable, and its meaning is impossible to damage or hurt in any way. तो exactly opposite way हो गया उस word का. तो vulnerable की जो word family है उसको भी देखा जा सकता है. वर्ड फैमिली में आ गया vulnerability. Vulnerability, and it is a noun now. You want a doctor who understands the patient's vulnerability. So that's it. So next word is entrenched. Entrenched. It is an adjective, and its meaning is mainly disapproving. So let us read its definition. Entrenched ideas are so fixed and have existed for so long that they cannot be changed. तो कोई ऐसा बिलीफ जो बहुत ही स्ट्रांग हो और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, we can call entrenched. And example is, it is very difficult to change attitudes that have become so deeply entrenched over the years. तो वो एटीट्यूड चेंज करना बहुत ही मुश्किल है जो entrenched बन चुका है, बड़ा deeply entrenched बन चुका है कई सालों से. Another example is, the organization was often criticized for being too entrenched in its views. So entrenched means समथिंग, कोई आइडिया है जो कोई बिलीफ है जो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड हो चुका है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसकी पूरी वर्ड फैमिली को भी देखा जा सकता है. तो रिलेटेड जो वर्ड है, दीज आर entreaty,
एंड इंट्रेंच ये थ्री वर्ड्स हैं जो इसकी वर्ड फैमिली से आते हैं. आप इसका भी मीनिंग फर्दर चेकआउट कर सकते हो. So next word is volatile. Volatile, it is an adjective. Let us see its pronunciation. Volatile. Volatile. Volatile, and volatile, it is an adjective and its meaning is changing. Change that occurs very suddenly, and its definition is likely to change suddenly and unexpectedly, especially by getting worse. तो कोई चीज़ है जो बड़ी जल्दी से चेंज हो रही है एंड अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वोलाटाइल. एंड स्पेशली इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, जो नेगेटिव सेंस में चेंज हो रही है चीज़. सो फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वोलाटाइल इन अ वॉर सिचुएशन. जो फूड और फ्यूल के प्राइसेस हैं वो सडनली चेंज होते हैं इन अ वॉर सिचुएशन. द सिचुएशन was made more volatile by the fact that people had been drinking a lot of alcohol. जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा सडनली चेंज होने वाली बना दी गई थी, क्योंकि जो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे थे. ओके, सो इसकी जो मेन है वो यही है कि जो चीज़ जो जो सडन चेंज हो रही है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ वोलाटाइल. तो इसके वर्ड फैमिली में एक और वर्ड है दैट इज, इसको नाउन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वोलाटैलिटी. Volatility. वोलाटिलिटी. Volatility. वोलाटिलिटी. सो वोलाटिलिटी इसकी नाउन फॉर्म चली गई. तो वोलाटिलिटी इन वीट ऑन वेंसडे रिजल्टेड इन अ सिंगल डे trading record in Kansas City. So this is the word volatility. 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 Well, next word is smallholder. Smallholder. Smallholder, it is a noun and its meaning is a person who owns or manages an agriculture holding smaller than a farm. सो छोटे किसान को हम स्मॉल होल्डर बोल देते हैं. सो अ पर्सन हु ओन्स एंड मैनेजेस अ एग्रीकल्चर होल्डिंग स्मॉलर देन अ फॉर्म. नेक्स्ट वर्ड इज adverse. It is an adjective. Adverse. Adverse, and its definition is having a negative or harmful effect on something. The match has been cancelled because of adverse weather condition. तो इट इज़ एन एडजेक्टिव. कोई अगर कोई थिंग है उसके कुछ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट हैं, हम उसको उसके आगे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ adverse. So smoking has some adverse effect on our health. Another example is, so far the drug is thought not to have any adverse effects. So this is how we can use this word. And let us see another word from this words family, that is adversely. Adversely, it is an adverb. So adverse का adverb बन जाएगा adversely. Well, next word is intuitive, and it is an adjective. Intuitive. Intuitive, and its meaning is based on feelings rather than facts or proof. Based on feelings rather than facts or proof. So कोई बिलीफ है जो सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव. इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है, दैट इज मोस्ट पीपल हैव एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मोस्ट पीपल हैव एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. समटाइम्स हमें कोई चीज़ गलत लग रही होती है लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो एक सेंस से हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है. मोस्ट पीपल हैव एन इंट्यूटिव
sense of right and wrong. So next word is mitigate. It is a verb and it is a very formal word. Mitigate. Mitigate, and its meaning is to make something less harmful, unpleasant, or bad. To make something less harmful, unpleasant, or bad. किसी चीज जो चीज बुरी है उसको कम हार्मफुल कम अनप्लेजेंट बनाना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट. It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island. So this is how we can use this word. So इसकी पूरी वर्ड फैमिली को देखा जा सकता है. मिटिगेट इट इज़ अ वर्ब. मिटिगेशन इसकी नाउन फॉर्म है. एंड मिटिगेटिंग, मिटिगेटेड, तो ये एडजेक्टिव वर्ब, इस तरह से हम इसकी वर्ड फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड. So next word is alleviate, and it is a verb and it is also a very formal word. Alleviate. Alleviate. Alleviate, to make something bad such as pain or problems less severe. तो mitigate जैसा word ही है ये. The drugs did nothing to alleviate her pain or suffering. So alleviate, it is very much similar to the word mitigate, कि कोई प्रॉब्लम है, जब पेन है उसको कम कर देना. जैसे हम कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं अपना कोई पेन को एलिविएट करने के लिए या फिर उसको मिटिगेट करने के लिए. सो द लास्ट वर्ड इज resilient. Resilient. Resilient, and its meaning is able to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad has happened. तो किसी चीज़ की एबिलिटी कि वो दोबारा से हैप्पी हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, जैसे वो पहले था किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू निकलने के बाद. सो शी इज़ अ रेजिलिएंट गर्ल, शी वोंट बी अनहैप्पी फॉर लॉन्ग टाइम. सो अनदर डेफिनेशन इज optimists argue that the economy may prove more resilient. सो इसका जो सेकंड डेफिनेशन है उससे शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दैट इज able to quickly return to its usual shape after being bent, stretched, or pressed. This rubber ball is very resilient and immediately springs back into shape. तो रबर की बॉल से जजमेंट करना इस वर्ड को इजी रहेगा